इंडिविजुअल की तरफ से पेश करदा 5 किस्तों पर मुहित तामीरी सहाफ़त के हवाले से पॉडकास्ट सीरीज़ के किस्त नंबर 4 में आपको खुशामदीद। इस किस्त का मौजू है कि पीस जर्नलिज्म और कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म के आपस में क्या मुमासलत है और क्या रिश्ता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि हर चीज़ के 2 रुख होते हैं, पर तामीरी सहाफ़त कहती है कि जिस चीज़ के बारे में आप जितनी तहकीक करेंगे उसके उतने ही रुख, उतने ही पहलू और उतने ही ज़ाविये नज़र आते जाएंगे। तो अगर आप तामीरी सहाफ़त करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा पहलुओं पर तवज्जो दें। हमने सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है, आइए जानते हैं। I think one element that is a good way to look at it is what in the research literature we would call episodic versus thematic stories. So an episodic story just focuses on a single episode of something. So that would be an example would be focusing on the train crash. That's, a single train accident. And that would be an episodic story focused on one episode. A thematic story would focus on the deeper roots, the more systemic issues. So why are trains crashing? What are the larger infrastructure problems, and what are people doing about that? So digging deeper and looking at these systemic issues, it adds more context to the story. And, that I would argue is a stronger constructive story than the one that focuses on the one event. जी हाँ, तामीरी सहाफ़त का दूसरा सुतून ये है कि हर पहलू के मुख्तलिफ ज़ावियों को रिपोर्ट में शामिल करें। उसके लिए ये भी हो सकता है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को इंटरव्यू करें, और इंटरव्यू करने के तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं, हमने पूछा माहिर तामीरी सहाफ़त से। There's a nice diagram that actually comes from a psychologist, Carl Tom, showing how there are 4 different interview styles, and you can ask questions in the style of a detective, or a captain, or an anthropologist, or a scientist. And so, of course, you can imagine, without going into detail, we see a lot of journalists asking questions like a detective. You can imagine the camera in the face, what happened? When did this happen? Right? Mic in your face. Yes, yeah. And the idea is that we should spend less time asking questions like a detective and more time asking questions like a scientist or an anthropologist, where we're really trying to explore and, learn more and allow people to think of creative ideas and to not make our sources feel defensive. इंटरव्यू के साथ साथ आप अपनी रिपोर्ट के हवाले से समाजी राब्तों की वेबसाइट से भी रिसर्च के लिए मदद ले सकते हैं, मगर याद रखें कि कोई भी चीज़ रिपोर्ट में शामिल करने से पहले उसकी तस्दीक ज़रूर करें। तो तहकीक करके जब आप एक रिपोर्ट लिखेंगे तो हैदराबाद से सिर्फ ये ख़बर नहीं आएगी कि वहाँ पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा बढ़ चुकी है, पर साथ साथ में ये भी खबर आएगी कि वहाँ एक वुमेन प्रोटेक्शन सेल भी कायम किया गया है। तो तामीरी सहाफ़त के मज़ीद मुहर्रिकात और मज़ीद सुतून क्या हो सकते हैं, ये जानेंगे अगली और आखिरी पॉडकास्ट में।